Hi, this is Chef Rakesh. Welcome to my channel where I make cooking look so easy. Now, the concept of cooking has to be clear. I've been hearing a lot about champaran cooking and handi cooking and biryani cooking and kya tasty hota hai. The whole essence of cooking is all about getting back to elements. Elements, earth, fire, wind, and the masalas, spices. The spices, the trick about any good cooking is that you got to make the spices with your own hand. ये पैकेट मसाला से वो स्वाद कभी नहीं आएगा जो आप खोजते हैं. सो लेट्स गो स्टार्ट कुकिंग एडवेंचरसली लाइक आवर फोर फादर्स यूज्ड टू डू. मैं एक दशकर्मा भंडार होता है बंगाल में जहां पर की सारी चीजें मिलती हैं. मिट्टी का हंडी लेके आया, मोटा मिट्टी का हंडी फॉर कुकिंग. टेल देम दैट यू शुड हैव अ थिक हंडी. और ये हंडी आप देखिए, ये 2 लीटर पानी की कैपेसिटी के आसपास का होगा. इसमें आप 1 से 1.5 किलो मटन या बिरयानी 1 किलो मटन का बना सकते हैं, या एनी वेजिटेबल कुकिंग, एनीथिंग यू कैन डू. लेकिन सबसे पहले मिट्टी का हंडी लेना है और आपके वहां से मिट्टी उठानी है. मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होनी चाहिए. और इसी मिट्टी को आप एक लेयर पानी में भिगो के इसे डाल करके अब आप गैस पे बना सकते हो. लेकिन जस्ट बिकॉज आई सेड आई वांट टू एडवेंचर एज माय फोर फादर्स यूज्ड टू डू. सो इस हंडी को हम धो लेंगे. अभी धो करके एक छोटा सा मेकशिफ्ट चूल्हा बनाया. 3 ईंट ले लिया. वो एक ईंट इधर है, एक ईंट इधर है. और जब हम कुकिंग करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चूल्हे का मुंह पूरब या पश्चिम दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं. उत्तर दक्षिण नहीं करना है. तो ये नारियल का छोबड़ा है, ड्राई कोकोनट हस्क. आग लगाने के लिए जल्दी से थोड़ी बहुत लकड़ियां हैं. एंड द कुकिंग टाइम फ्रॉम रॉ मटन विल बी, इफ यू सील इट, यदि आप सील करके बनाते हैं, इफ यू सील द पॉट, देन द कुकिंग टाइम विल बी ऑलमोस्ट 4 hours, sorry, 1.5 hours. And if you don't seal it, it may take ages depending on the quality of your mutton and how much you have marinated it. So let's go cracking. तो बेसिक प्रिपरेशन ऑफ मटन, ये मेरा करीब ठंड का दिन है और द टेम्परेचर बाहर का था 11 डिग्री सेंटीग्रेड. फोकस ऑन द मटन प्लीज. नाउ आई हैव टेकन सम टेंडर पीसेस, द लाइन चॉप्स. लाइन चॉप्स, रिमेंबर लाइन चॉप्स. थोड़ा हड्डी हो, थोड़ा मटन हो, क्योंकि it oozes out the juice. It oozes out the juice and then I marinated it. Marination में आप सरसों का तेल या कोई भी तेल को गरम करें, बढ़िया से गरम करके इसमें डालें. एंड जो बेसिक मसाले आपके पास हैं, you can use that turmeric powder, red chili powder, garam masala powder, basic garam masala. I'll prefer that you prepare it at home by pounding it. Then you have tender धनिया पाउडर, जिसे हम हरा धनिया कहते हैं. See, and my daughter loves this, मेटे कहते हैं, हम इसे कलेजी कहते हैं, ये liver. So I have marinated it and kept it overnight. Now the choice is yours. कभी रिच बनाना है, अवधी या मुगली स्टाइल में जाना है, तो you can actually add काजू पेस्ट in this and some मगज पेस्ट. मुगलई साइड में जाना है. एंड यदि आप अवधी बनाना है तो केसर डालें और थोड़ा सा दूध दही भी डाल सकते हैं. The richness has to be there. मावा भी डाल सकते हैं, but I am avoiding that. I am just preparing basic mutton with some saag and root vegetables. तो वो क्यों डालूंगा वो भी बताता हूं मैं. फिलहाल एक मैरिनेटेड मटन जो मिनिमम 4 hours, मैक्सिमम 12 hours आप रख सकते हो. बाहर का टेम्परेचर है, खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए. गर्मी के दिनों में 4 घंटे, 2 घंटे बहुत हैं. जाड़े के दिनों में आप 4 घंटे से 12 घंटे रख सकते हो. और फ्रिज में भी डाल सकते हो आप, नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज में. गर्मी ज्यादा है तो नॉर्मल टेम्परेचर में डाल दीजिए 4 से 6 घंटे. Let the flavors get infused, but the trick is hot oil. Hot oil करके इसे इसमें मिलाना है थोड़ा सा. Around 1 kg मटन में you can put around 75 to 100 milliliter of कड़कता हुआ गरम तेल. Thank you. Have some fun while you're cooking. Have some fun. Now these onions play a very vital role. क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें. एंड ये जो अनियंस हैं, ये अनियन एक नीचे का लेयर फॉर्म करेंगे. आप इसमें थोड़ा एक लेयर ऑफ अनियन विद सम स्पाइसेस sprinkled over it so that it gives a protective layer. क्योंकि आप जब दम डालते हो तो आपको चलाने का मौका नहीं मिलता है. So you make sure that your mutton doesn't get burnt up. And I'm not using a lot of water.
पानी नहीं यूज कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं, बस जितनी मिनिमम जरूरत है उतनी ही पानी, उसका अपना खुद का पानी है, उसके भीतर खुद थोड़ी सी फैट होती है, चर्बी होती है। तो इनफैक्ट आई लव कुकिंग विद मिनिमम ऑयल। 5 kg मटन वी कैन कुक इन से अराउंड 250 grams of oil, because I believe कि हर खाने में अपना तेल होता है which will come out. Oil is needed only to get your spices carried to every part of the vegetable or the food. So you can actually do away with a lot of oil cooking traditionally used. And 1 kilo mutton में I have taken almost around 400 grams of 400 grams of onion, and I think just sufficient enough to actually keep it moist. And of course, when you need that gravy part, the lovely small kitchen garden that I have. These are the broccoli plants, and this is cabbage, and these are methi leaves. Methi leaves, yani fenugreek. For my mutton, I'm going to use these methi leaves. I'll just take the tender leaves. See, I should have used it, say, maybe a week ago. But then, we always plan something that doesn't happen. Fresh garden plugged fenugreek leaves. See, the bottom part is a little thickish, so I don't need that. I've just taken the top part of it. This I'll use it for something else. And these are the tender leaves, which I'm going to chop and use it in my mutton, malai, methi, mutter, or whatever variety you want to say, but it's basically handi mutton in different styles and flavor. You can use methi, fenugreek, you can use dill leaf. क्योंकि ये बिहार में बनता है, तो बिहार में सोआ, that is dill leaf, is in very high demand. People love to have it. It's a hot spice, keeps you warm, your nerves and other basic macronutrients are there. So these fenugreek leaves, good for your nitric acid, that keeps your clogging of the blood away. So have it in moderate quantity regularly. Methi paratha, aloo methi, and this mutton also goes with us. Welcome back, Chef Rakesh here. So you see, I have a small fire going on, and this मिट्टी की हंडी, इस हंडी को इसके ऊपर हम रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, बाहर का जो लेयर है, एंड कुकिंग में मदद करे. सो आई एम पुटिंग सम वाटर इनटू इट. ये नया हंडी है, इसे थोड़ी सीजनिंग चाहिए होती है. पानी बॉयल होगा और इस पानी को हम फेंक देंगे वॉश करके, एंड देन वी विल अगेन डू इट दिस प्रोसेस ट्वाइस, एंड फाइनली वी विल स्टार्ट अवर मटन कुकिंग. So, the next step involves getting the spices sufficiently, the aroma, the flavor, the taste incorporated into these things. So, how do you do it? If you're not sure about your earthen pot cooking, heat some oil, put this stone flour, cardamom, and bay leaf, and a little bit of hot spices. Okay, what I've done is I've just done some quick bit of cooking, and there it goes inside my handi. These onions, which I'm going to put into this handi. And now I'm going to put some potatoes. Why? We should have some root vegetables down below. What it does is takes the flavor in and protects the mutton from burning. But since I'm not going to add a lot of water into it, or no water in fact, the moistness of these root vegetables will keep it going.
And don't worry about the size, because at the end of the day it is going to be mashed up. Hardly half of it will remain. And then I have this wonderful spinach. There goes my spinach and little bit of garlic, some wholesome garlic, which will become so very aromatic at the end of the day. You don't have to stir it, you know. I put some freshly pounded coriander, green coriander, and little bit of cumin powder. And on top of that, I'm going to put my mutton. A kilo will get you something around 16 to 18 pieces. You should put the bone pieces first. Okay. Now, sometimes what you can do is you can have soaked rice, and if you have soaked it for 2 hours, you can just layer it with soaked rice and some garam masala powder and some pudina leaves chutney, and on top of that again you can put these other pieces of mutton which are soft and succulent. But today I am focusing on preparing my handi mutton. As you saw, ये मेरे बगान से किचन गार्डन से लिया हुआ मेथी लीव्स है. जो रिमेनिंग इसके भीतर था, इसे मैंने इससे ढक दिया, and I'm covering it with methi leaves, freshly plucked methi leaves. Now, what should be the volume of items along with your vegetables? And let me tell you one simple thing. 2/3, you can pull any vessel half to 2/3, not more than that, because let the air roll into it, let it soak up, and mix up the aromas into every other bit. So that is one bit about cooking in dum style or a pressure style or a handi style. Kneaded dough, simple flour kneaded dough to seal my cap. Let's see how we go about it. तो दो ढक्कन है मेरे पास, एक ऐसा वाला है और एक ऐसा वाला. तो मैं अपनी बेटी से डिबेट कर रहा हूँ कि कौन सा यूज करें. बेटा, यू टेल मी. ओके, आई थिंक ये ढक्कन खोलने में ज़्यादा आसानी होगी, मैं इसको यूज करूँगा. Right now the time is 12 o'clock. If we keep the dum on with this small bit of fire and with the moisture content that it has, the mutton will take almost 2.5 to 3 hours, because remember I am using raw mutton. कच्चे मटन से बनाया हुआ चीज़ है, सामान है, और इसे 2.5 से 3 घंटा, आइडियली 4 घंटा आपको रखना है, and then it will come out so wonderful. Make sure that no steam is escaping you. Temperature should be just enough. Temperature should be just enough. So smoke has got into my eyes. Temperature should be just enough to keep the pressure on going inside the vessel. High, low, medium doesn't matter. So I'm back with my handi mutton. Handi mutton, as I told you, it's palak methi handi mutton. 2.5 घंटे तक वुड चारकोल पे, वुड फायर पे कुक हुआ है, और ये जो दम था ये ड्राई हो गया है.
मैं इसे अब खोलूंगा. Let's see how it looks. Come on, close up. As you open up this seal layer, ये देखिए dry. I have a feeling that the smell is awesome. I can smell the mutton. Its own juices, the palak, the methi, the cover of methi is still there. And I got to take it out and put it in a separate bowl. और अलग से निकाल के देखते हैं कैसा बना है. This is what we have got from our handi. The speciality is, see the mutton bones, the char, the palak and methi around it. Now you can have a fresh ghee ka tadka over it, but it's so well done. Raw mutton, the bones are coming off. बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गया है, जड़ा भी कुछ नहीं है. You can see raw mutton से जब आप बनाएंगे तो इसका जो टेक्सचर है ऐसा, and it is cooked. Perfect salt and that अपने ही जूस में जब पकता है कुछ और वो जो मजा देता है वो सिर्फ खा के ही पता चलेगा. One more. This is dry. We can make it with gravy also. So very different. So very spicy. Or taste. Wow. Let me eat some. Perfectly done. इससे बेहतर कुछ नहीं.